I'll just open it. This is how they look. Hey guys, welcome to my channel Riya this side, and I hope you are doing good. So on this channel I post content related to fashion, beauty and lifestyle. So if you are interested in such kind of content, then you can take a moment and subscribe to my channel below. And in today's video, you already know by the title that this video is going to be Ever Stylish haul. Now I have been wanting to do this video since a long time, but there is this one product which I have been wanting फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब मैंने एवर स्टाइलिश को डिस्कवर किया था और ये तब से ही आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था. एंड जैसे ही मुझे पता चला दैट इट इज बैक इन स्टॉक, आई जस्ट ऑर्डर्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड without wasting a single minute. So if you are interested to know what all I got, then stay tuned and keep on watching. And without wasting any more time, let's just start today's video. Alright, so I have tried to include all the categories from their website, which is the neck pieces, the ring, the earring and the bracelets. So I have tried to cover all these 4 categories, and I have bought at least a piece from all the categories. And we have oxidized jewelry, we have dainty pieces. So yes, now let's start with the haul. So I received all my jewelries together and within 5 days, and this is how it looks like. प्लीज इग्नोर दिस ब्राउन टेप, ये मैंने किया हुआ है क्योंकि मैंने पहले इसको बॉक्स को खोल चुका है. सो आई पैक्ड इट इटसेल्फ ताकि मैं इसको दोबारा से खोल के पूरा एकदम अच्छे से दिखा सकूं. आई डोंट नो बट आई रियली वांटेड टू डू दैट. सो यस, नाउ लेट्स ओपन इट. यू कैन सी ये बहुत खराब हालत से खुला है. सो या पॉलीथीन पैकेजिंग के बाद ये एक इस टाइप के बॉक्स में आती है, यू कैन सी. एंड व्हेन यू ओपन इट, इसमें ये एक फोम का होता है, मे बी ताकि कोई प्रोडक्ट डैमेज ना हो. सो सारे के सारे ज्वेलरी पीसेस इस टाइप के पॉली बैग्स में आते हैं. एंड आई थिंक द पैकेजिंग इज फाइन. आई वुडंट से कि बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, बट इट इज quite fine. So without any particular order, let's start with our first jewelry. So I got these earrings. So this is how they look like. I know they are very pretty. Now these are pearl hoop earrings, and it's the name says pearl in the gap which is quite interesting. And you have this thing जिससे इनको पीछे लॉक कर सकते हैं. एंड ये वैसे हूप्स नहीं है जैसे हमारे यूजुअल हूप होते हैं. Now honestly speaking, I really like them, but the only problem that I got with these कि ये बहुत बड़े हैं and I don't wear इतने बड़े hoops. I was expecting them to be a little smaller because website पे when you see them ये इतने बड़े नहीं लगते हैं. I don't like to wear इतने बड़े hoops. And honestly, I don't really wear a lot of earrings. मुझे earrings पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. So that's why I got just one pair to test कि कैसे प्रोडक्ट इनके होते हैं, because I have never used and I was never a jewelry person, but I like to wear the bracelets. मुझे हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है. Either it can be a watch, it can be a bracelet. I want anything on my hand, वरना मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती. And I wanted to try the neck pieces as well. तो फिर मैंने सोचा कि earring क्यों छोड़ना भाई, तो I got the earrings as well. But they are very pretty. When you will wear them, they are gonna look very beautiful. They are elegant, they are classy, and you can pair them on any dress. You can pair them up with your Indian dresses, you can pair them up with your western dresses. So that is the best part about these. Plus जो pearls होते हैं वो बहुत ही elegant and classy look देते हैं. The quality is really good. That is one thing that I really liked about these, कि इनकी quality बहुत अच्छी है. So yes, you can definitely try these if you are into hoops. And hoops तो I guess एक forever fashion है. So you definitely should check out these. Now moving on to our next product, which is going to be the ring. This is how it looks like, as you can see. So I loved this ring. Now if you are a minimalist person and you don't like to wear a lot of jewelry, then this one piece is something that you can wear at any occasion and they are gonna look
बॉम्ब, क्योंकि अगर आप एक बार ये रिंग पहन लोगे देन यू डोंट नीड टू वेयर एनीथिंग एल्स. इट इज फॉर अ मिनिमलिस्टिक लुक. ऑल्सो द रिंग इज adjustable, as you can see. You can adjust it according to your finger, which again is a very good thing. Now the pattern is very pretty. I really like the pattern of this ring, and it is quite sturdy, it is quite strong. I really like the quality as well, so you can definitely go for it, and it is a must have. If you are buying any jewelry piece, then a ring which is a boho ring, oxidized one, it is a must have. You definitely should get this. Now moving on towards our next jewelry, which is this beautiful dainty neck piece, as you can see. Now this is how it looks like, and it is a really pretty chain. Now it is a defective piece क्योंकि इसका जो ये hook है ये नहीं खुल रहा है, but otherwise the quality wise it is very pretty. Now these are very delicate, and क्योंकि ये dainty jewelry pieces होते हैं तो ये बहुत delicate होते हैं और इनको बहुत utmost care के साथ you have to keep them. But again I got the defective piece. Now one thing that I really liked about this is कि आप इसको adjust कर सकते हो. Like you can see, you can adjust it. बट अगेन इसकी जो लेयर्स है वो एक साथ जुड़ी हुई है, वो अलग अलग नहीं है लेयर्स. दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि ये एडजस्टेबल है. यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. इट हैज दिस इनफाइनाइट का साइन. आप इसको चोकर बना के एंड इस इनफाइनाइट साइन को एक लॉन्ग चेन का लुक दे के भी यू कैन वेयर इट, एंड इट विल गोना लुक वेरी ब्यूटिफुल. द क्वालिटी इज good enough to be of 138, but honestly speaking Urbanic के accordingly मुझे एवर स्टाइलिश की ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगी है. So yes, moving on to our next jewelry piece, which is this geometrical dainty necklace. Now again it is very pretty. It is a layered chain. I don't know why I want to try something different, and I got this. अगेन इट इज अ एडजस्टेबल वन, जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो दोनों को, कि आप एक को लॉन्गर एक को शॉर्टर रख सकते हो या फिर दोनों को इक्वल रख सकते हो. सो दैट इज टोटली योर चॉइस. नाउ अगेन इट इज अ डेंटी पीस, सो यू नीड टू हैंडल इट विद केयर, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं. आपने इस पर प्रेशर लगाया नहीं कि ये टूट जाते हैं. सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, एंड ऑलवेज कीप देम अवे फ्रॉम मॉइस्चर. So yeah, now moving on to our next jewelry piece, which is again a dainty neck piece, and it is this night sky neck piece. Now this is how it looks like, as you can see. Now इसमें कोई भी इसका क्लोजर नहीं है, क्योंकि you can wear it like opening these two. Then when you wear it like this, you can again add the star in the moon, and you are good to go. So I think it is very handy, क्योंकि you don't need to go to someone else की please इसको बंद कर दो. You can do it on your own, and plus it gives a really pretty effect. Now I love stars and moons. I am a cosmic person. Now when I was adding all these jewelry pieces खरीदने के लिए, तो मैंने मोस्ट ऑफ द पीसेस सारे स्टार्स और मून वाले ही डाल रखे थे. एंड ऑल्सो फ्रॉम अर्बेनिक आई बॉट द नेक पीस, जो जिसमें सिर्फ स्टार्स थे. स्टार वाला नेक पीस था. इफ यू हैवंट वॉच दैट, यू कैन वॉच इट. आई विल एड इट इन द आई कार्ड. एंड आई गॉट दिस नेक पीस जस्ट फॉर दैट पर्पज. एंड मैंने बहुत सारे स्टार मून वाले, मतलब जितने भी उस पर स्टार मून वाले नेक पीस थे मैंने सब डाल रखे थे. बट देन आई नीड टू शो वेरिएशंस. इसमें मैं सिर्फ अपनी चॉइस नहीं, हर टाइप की चॉइस दिखाना चाहती थी, ताकि हर किसी इंसान के लिए ईजी रहे लेना. सो येस, फॉर दैट रीजन आई गॉट ओनली दिस वन पीस, एंड मुझे थोड़ा यूनिक और बहुत डिफरेंट और ब्यूटीफुल लगा. दैट्स व्हाई आई गॉट इट. इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बिकॉज जो अदर ज्वेलरी पीसेस थी उनकी क्वालिटी से मच बेटर थी.
Now moving to our yet another neck piece. This time it is not a dainty piece. This time it is a choker, a boho oxidized choker. Now again, if you are a minimalist and you don't like to add up a lot of jewelry pieces, like you don't want to wear everything, then you can go for a choker like this, and you can create a lot of looks using this. Like you can wear it with your Indo-Western, with your Indian dresses, with your Western dresses, and it will gonna look beautiful. When I saw it on their website, I was like, I need to get this because I didn't had a single piece of oxidized or boho jewelry, so I got it. If I have to talk about quality, I don't think it is the best quality in the market, but for the price that you are paying for it, I think उसके हिसाब से इसकी quality is quite good. You can definitely try it. If you want a simple choker, जैसे मुझे एक simple choker चाहिए था, if you want a simple choker just like me, then you can definitely go for it. If you want a little more elevated and थोड़ा और designing वाला choker, then you can search their website. उस पे बहुत सारे choker थे उनकी website पे, but I think I love this one the most. फाइनली कमिंग टू आवर लास्ट प्रोडक्ट, जिसके लिए मैंने इतने टाइम वेट किया, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये नहीं कहूँगी दैट इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट. जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकला, बट इट इज़ प्रिटी. नाउ दिस इज़ अ ब्रेसलेट. वेट, आई विल शो यू. So this is a bracelet, a golden heart bracelet with rhinestones, and this is how it looks like. Now honestly, ये जो heart है, I was expecting them to be a little bigger. बहुत ज़्यादा छोटे हैं, and उसके हिसाब से this material is a little thick. So एक बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा है. जितने भी उनके पीसेस थे उनमें सबसे अच्छा मुझे यही ब्रेसलेट लग रहा था. एंड आई लव टू वेयर समथिंग इन माई हैंड. मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इधर अ ब्रेसलेट और वॉच, एज यू ऑलरेडी नो अगर आपने वीडियो देखी है स्टार्टिंग से. So yeah, I think I really wanted to buy a bracelet, so I got this one. Now it looks a little big, पर ये सभी क्योंकि सभी के हाथ के लिए चाहिए होता है, so you can adjust it like this. So you can see. Now it is not that loose for me. You can again tighten it more. जितना आपको लूज चाहिए या जितना आपको टाइट चाहिए, you can adjust it according to that. मुझे थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है हाथ में, ताकि हाथ थोड़ा फ्री फ्री रहे. But I think it is looking quite pretty. Now for the price point of view, it was for 98 rupees. If you want to experiment, you can try it. So yeah, this is something that is completely your choice. You have seen how it looked on my hand, so you can choose according to your wish. If you still like it, then you can definitely go for it. I'm not saying that it is the worst, but yeah, I can work with it. So I'm not going to return or exchange it. I think I like it and I'm going to keep it. Alright, so this is it for today's video. I hope you liked this video. If you did, then give it a thumbs up, and also subscribe to my channel below and hit that bell icon with it too, so that next time I post a new video, you will get notified. And I shall see you in my next video. Until then, stay tuned and bye bye.